बहुत सी फिल्में नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे लगता है कि मुझ में ज्ञान ज़्यादा नहीं है लेकिन अनुभव काफ़ी है। और somewhere I felt that through my travels as a journalist, and we've done a book together, The Absent State. We traveled some 40,000 kilometers over 3 years. Those emotions, that angst, those journeys have stayed, those moments have stayed. And I was feeling a little not out of place in journalism, but ये लग रहा था कि lost opportunities हो रही हैं। कोई गाना देखता था स्क्रीन पे, लगता था कि यार ये क्या लिखा है, क्या बकवास ये है। तो लगता था कि मैं चूँकि करीब 10-12 साल से फिल्मों में गाने लिख रहा हूँ, but I wanted to basically take a sabbatical, and I walked up to my editor and I said I want to go off to Bombay, and he said some people can live with regret and some people cannot, and I said I cannot. So I went and I set up a band. सबसे पहले मुझे कहा गया था कि एक म्यूज़िक एल्बम बनाइए और उसको बनाने के पैसे मिले थे, तो मुझसे कहा गया कि आजकल म्यूज़िक, नॉन फिल्म म्यूज़िक बिकता नहीं, क्योंकि आप सब तो बारिशी कर करके हम जैसे कलाकारों का जीना हराम कर ही देते हैं। तो नॉन फिल्म में देयर इज़ नो मनी, तो आप ऐसा करिए एक बैंड बना लीजिए और उससे पैसा कमा के आप हमें पैसा वापस कर दीजिए। मैंने कहा बैंड मेरे जैसे लोग तो बनाते नहीं, मेरे तो लंबे बाल तक नहीं है। तो वी सेट अप अ बैंड व्हिच वाज स्टोरी टेलिंग बैंड, जिसमें मैं बैंड के साथ बैठा और मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक राइटर लेड बैंड बनाते हैं। सर अच्छा ठीक है, तो राइटर क्या करेगा? एंड ओनली आई स्वेयर, ओनली टू सेव माई जॉब एंड नॉट बी अ नॉन प्लेइंग कैप्टन, आई सेड राइटर कहानी सुनाएगा। बस आई थिंक दैट वाज द मोमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी, बिकॉज आई ओनली टू जस्टिफाई माई प्रेजेंस इन दैट बैंड एंड नॉट जस्ट रिमेन अ लिरिक राइटर whose name would be somewhere, but you know, अच्छा तो ये कहानी कैसे सुनाएगा? मैंने कहा, and I'm thinking and selling my job to my own band as I'm talking. नहीं, वो राइटर आएगा, कहानी थोड़ी सी सुनाएगा, फिर राइटर चला जाएगा, फिर गाना होगा, फिर कहानी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा ये this can never work. So there is a line that has been told to me often throughout my career, which now I wear as a badge of honor, which has been told to me in different words, which is this is a brilliant idea, it will never work. So when I started the band, I was told that by various people, how can a storytelling band work? But we performed at the Kalagoda Festival in Mumbai, and I was happy to see there were people on trees who were listening to Shilpa Rao, my colleague, singing, and me narrating the stories, and I think that just changed the whole course for me. फिर 6 महीने बीत गए, मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ये अगला लम्हा मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला है? और ऐसे गुजर जाते हैं ये लम्हे, और आप बाद में जब पलट के सोचते हैं कि सोचिए वो लम्हा जब मुझसे किसी ने पूछा था कि राइटर स्टेज पे क्या करेगा, अगर मैं उस वक्त बोल देता कि असल में ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है मैं आपको अपने लिखे गाने दे दूँगा और कहाँ आप, बट आई थिंक दैट मोमेंट चेंज माई लाइफ। तो उसके बाद 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता था, आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स कि भाई क्या सोचा है, सबैटिकल पे था मैं, मेरे पास पैसे सिर्फ 9 महीने तक सर्वाइव करने के थे, मेरी EMI वगैरह भी थी। एक दिन मैं प्रीतम के स्टूडियो में बैठा था और we were working on a song, and I looked around and I said, I like this life. And I walked down and I emailed my resignation from the parking lot. Tell us something about your experiences as a journalist. As Neelesh said, Neelesh and I have traveled a lot in the good old days when he was in Delhi for this book called The Absent State, where we traversed through 40,000 kilometers.
of India's proverbial heart of darkness, from Kashmir to India's northeast, मैं to बेच central चुका and हूँ eastern India. ये मैं बेच चुका हूँ हाँ? मैं बेच चुका हूँ और उस ज़माने में मुझे याद है एक नीलेश का स्लोगन हुआ करता था, I prefer a label on my forehead than drinkers on my eyes. I think that slogan has kind of guided his, not only his reporting but the rest of his career also in many ways. Now I know Neelesh that I've learned a lot of lessons, a lot of experience gained from those travels in conflict areas. But what are the lessons you learned from traveling as a reporter through India's hinterland? You know, I think whether as a journalist or as a storyteller, the one biggest mantra that has stayed with me, and that's extremely relevant, I would say today, because जो social media, especially the surge of social media, has amplified hatred and negativity so much. It's easy to hide behind an anonymous handle, abuse somebody and run away like cowards. तो जो बातें आप डाइनिंग टेबल पे कहते थे कि अरे वो तो चोर है, अब आप सीधे उसके हैंडल पे एड्रेस कर रहे हैं, तू तो चोर है, और आपकी कोई जवाबदेही नहीं है. तो ये एक अद्भुत सुविधा आपको देती है सोशल मीडिया. I think the big thing I tried to learn was to be the other. दूसरा बन के सोचना. इतना डिवाइसिव आजकल समाज है रिलीजन के बेस पे या कास्ट के. सो मैं एक बार मैंने कश्मीरी मिलिटेंट, पाकिस्तानी मिलिटेंट को इंटरव्यू किया था. 2-2.5 घंटे उनसे बात की और वो he was in captivity. He was 25 years old. He was from Bahawalpur town. We used to watch Bollywood films. And here he was, trying to kill people. And at the end of it, I said कि मैं आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आपके हौसले की कदर करता हूँ. So, what is it that would drive a person to pick up a gun? I would want to know that. There was a series I had done called Mission Kashmir, where I traveled with a Kashmiri Muslim and a Kashmiri Pandit. और मुझसे पूछा गया कि आप तो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं. मैंने कहा देखिए, अगर मेरा नाम नील मोहम्मद होता तो दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया अलग होता. क्या वो गलत होता? बिल्कुल नहीं. वो एक नज़रिया होता, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक नज़रिया दे दिया जाता है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये सही है, ये गलत है. और हम उससे बाहर आके अगर कभी सोच पाएँ, अगर इफ़ यू कैन बी द अदर, अगर हम दूसरा बन के सोच पाएँ, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टोरी टेलर, एक अच्छा राइटर. एज अ स्टोरी टेलर आई बिकम अदर पीपल एवरी डे. आई हैव प्लेड द कैरेक्टर्स ऑफ women and children and even a yellow scooter. I have been a yellow scooter in my stories. I think this is the biggest takeaway I have and the biggest privilege I have, I would say. And थोड़ा इससे ह्यूमिलिटी भी रहती है अब, क्योंकि आजकल जर्नलिज्म में क्या हो गया है कि जर्नलिस्ट भूल गए हैं कि वो स्टोरी कर रहे हैं. जर्नलिस्ट सोचते हैं कि वही स्टोरी है. तो ये एक बड़ी बीमारी फैल रही है पत्रकारिता में.